Viewers, welcome to the Learners Nursing classes. Today we will discuss multiple choice questions of important competitive exams. This is mock test part 3. We will be going for total 4 mock tests. Fourth will be coming shortly. So now, as requested, I will go little slow on the video and reading all the options, and then I will explain you the correct answer. So let us start. Inability to produce semen in a man is called aspermia, azoospermia, asthenospermia, teratospermia. So here the answer is azoospermia. Coming to the next question, in Weber's test, lateralization of sound to the diseased ear indicates. The first you should know what is the Weber's test. एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है जिसको बजाकर माथे पे लगाते हैं या सर पे लगाते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि कौन से कान में आवाज़ सुनाई दे रही है. दैट इज़ वेबर टेस्ट. तो इसमें क्या बोला है? लैटरलाइजेशन ऑफ साउंड टू डिजीज्ड ईयर इंडिकेट्स. Now what are the options? Conductive deafness, sensory neural deafness, tympanic deafness या combination of both sensory neural deafness and conductive deafness. So here the answer is conductive deafness. Which artery is commonly affected during myocardial infarction? See, myocardium में जो artery present होगी वही affect होगी. So what are the options? Renal artery kidney में होती है, celiac artery abdomen में होती है, coronary artery heart में होती है और hepatic artery liver में होती है. So what will be the correct option? Coronary artery. What is the main sign of the tuberculosis? See, whenever we look for the sign and symptom of tuberculosis, for example, the options are coughing more than 3 weeks, coughing occasionally, coughing only at night time, and mild coughings. Here the answer is coughing more than cough prolongs for more than 3 weeks. The goal of clinical management of a patient with COPD is improvement in ventilation, increase in the bronchial secretion, improvement in the general health, or all above. So here the answer is all above. Liver abscess mainly occurs in the right lobe of the liver. So here the answer is right lobe. In which of the following disease condition glucocorticoid therapy is applicable? See, the option is chronic adrenal insufficiency, bronchial asthma, preventing graft rejection in organ transplantation. So actually देखा जाए तो chronic adrenal insufficiency, bronchial asthma and preventing graft rejection in organ transplantation सब में glucocorticosteroid therapy देते हैं. So here the answer is all above. Most useful test for the diagnosis of diabetes mellitus is urine glucose, ESR, glucose tolerance test, ketone body level. See, we first do GTT, glucose tolerance test. A patient with cerebral thrombosis is scheduled for cerebral angiogram. Which of the following nursing care is appropriate for this client? So read all the options. Inform the client that a warm, flushed feeling and a salty taste may occur during the procedure. Avoid applying a pressure dressing over the site of puncture. Keep the extremity used as puncture site flexed to prevent bleeding, or all above. सी इसमें क्या होता है, जब भी एंजियोग्राम करते हैं तो वो एक डाई इंजेक्ट करते हैं. सो हेयर इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट अ वार्म फ्लश्ड फीलिंग एंड अ सॉल्टी टेस्ट में ऑकर ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द डाई. सो हेयर द आंसर इज ऑप्शन ए. व्हाट डज मेल इंटरसेक्स मीन्स? सी, मेल इंटरसेक्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया कैसे होगा और बॉडी के अंदर ऑर्गन कैसे होंगे. सो लेट अस लुक इनटू द ऑप्शंस. द प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया विद मेल गोनाड्स, presence of male external genitalia with female gonads, a man having sexual relation with another man, a man having sexual relation with a woman. See here intersex mean, सो इसमें क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा और अंदर गोनाड्स प्रेजेंट होंगे. So that is called as male intersex. What is the main reason for angina pectoris?
So, what can be the reason? Neurological disease, gastric disease, respiratory disease, cardiac disease. Angina pectoralis या angina pectoris means the heart chest pain. So, it is related to cardiac disease. So, answer is cardiac disease. What does cystocele mean? Accumulation of fluid in the urinary bladder, bladder sloughing, bladder infection, having a bladder atrophy. So, the answer is bladder sloughing. Side effect of long-term glucocorticoid therapies are, see what are the long-term therapy side effect, like peptic ulcer, sensitivity to infection, cataract and glaucoma. See, so whenever you see the option, peptic ulcers होते हैं, cataract and glaucoma होता है, sensitivity to infection होता है. So answer will be all above. Cholelithiasis is, देखो coli is related to bile and lithiasis is related to stone. So here it is stone in the gallbladder. Which is the best test for detecting liver dysfunction? Serum albumin, serum bilirubin, SGPT, prothrombin time. See, the best test is serum albumin. Which of the following is a bone disease that causes loss of bone density and increases the risk of fracture? Osteoporosis, hyperglycemia, hypoglycemia या emphysema? Very clearly the answer is osteoporosis. In dyspepsia, small amount of acid secreted in the stomach. Acid is secreted in excess in the stomach. No relation to acid secretion in the stomach. None of above. So here the answer is acid is secreted in excess in the stomach. The reason why lipstick and nail polish is removed before surgery is, so what can be the reason when you have to operate the patient in the surgery, तो आपको उसके nail beds check करने हैं, lips check करने हैं, for what? For the cyanosis. So what is the purpose of checking the removing the nail polish? The cyanosis is checked. Answer is cyanosis is checked. तो rest all options are not there. पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. Glucocorticoid therapy should not be stopped suddenly because when you suddenly discontinuation may result in serious mental disorders. Option A. Option B, sudden discontinuation may cause allergic reaction and infection. Third, sudden discontinuation may cause severe adrenal insufficiency. None of above. See, हमने पहले पढ़ा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी किस में देते हैं, तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी में भी देते हैं. और व्हेन यू सडनली स्टॉप दीज ड्रग्स, तो दिस विल कॉल सडन डिसकंटिन्यूएशन मे कॉज severe adrenal insufficiency. The nurse is caring for a male client with a diagnosis of chronic gastritis. The nurse monitors the client knowing that this client is at risk of which vitamin deficiency? C. Vitamin A, B12, vitamin C, vitamin E. Here the answer is vitamin B12. Raynaud's disease is a nervous system disease, digestive disease, heart circulatory disease, respiratory disease. Basically Raynaud's disease is a disease of the circulatory system. ये blood vessels में होती है, तो it is related to heart circulatory disease. The immunoglobulin that is found in the breast milk is, see what is the answer? IgG, IgM, IgD, IgA. So here answer is IgA. The trauma caused during myocardial infarction and dysarrhythmias is cardiogenic trauma, hypovolemic trauma, neurogenic trauma, septic trauma. See, it is called as cardiogenic trauma. T-tube drainage is used after which surgery? सी ये जो टी ट्यूब होती है ये हमेशा सर्जरी में यूज़ होती है जब आप गॉल ब्लैडर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, बाइल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. टू ड्रेन द बाइल द टी ट्यूब इज इंसर्टेड. सो ऑप्शंस आर लोबेक्टमी, बिलरॉथ, cholecystectomy and ileostomy. Here very clear cut answer is cholecystectomy. The cause of pneumonia in AIDS patient is, see here the option are Staphylococcus, Streptococcus, Pneumocystitis carinii, Mycoplasma. Answer is Pneumocystitis carinii in HIV patient. Presence of sugar in urine is called, oliguria नहीं बोलते हैं, glycosuria, hematuria, pyuria. See here the option is glycosuria.
What is the drug of choice for thalassemia? See, vinblastine, dilantin, and deferoxamine. So here the answer is deferoxamine. Cancer found in connective tissue is called carcinoma, sarcoma, leukemia, metastasis. See, very clearly it is sarcoma. The percentage of population suffering from serious mental illness is 3%, 1%, 10%, 5%. It is 10%. Figure has to be remembered. What is unnecessarily excessive fear of high places called? See, agoraphobia, acrophobia, algophobia, genophobia. Here the answer is acrophobia. In which chapter of Mental Health Act there is a rule regarding the discharge of the mental patient from the hospital? See here the option is chapter 5, 6, 7, 8. This means the Mental Health Act wala. So answer is chapter 5. इसको तो याद ही कर लो. What does zoophobia means? See, zoophobia का मतलब क्या होता है? Inexplicable fear of closed places. No, that is claustrophobia. Inexplicable fear of water, that is hydrophobia. Inexplicable fear of animals, that is zoophobia. And fear of open spaces का भी नाम है, which I am not able to recollect. So here the answer is animals. Reversible dementia is seen in Wilson, myxedema, Alzheimer's, Huntington disease. See, answer is myxedema. Mania is characterized by, देखो mania में ना बहुत ही यूफोरिक स्टेट होती है इंसान की, और पैरानॉइड डेल्यूजन, हाई सेल्फ एस्टीम, लो इंसाइट, लो ओरिएंटेशन. तो इसमें क्या हो सकता है? इंसान बहुत ही खुश होता है, एकदम हाई मोड में चल रहा होता है. द आंसर इज हाई सेल्फ एस्टीम. ऑल इंटरवेंशंस प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन प्रीटर्म बेबीज़ एक्सेप्ट कौन सी जो है वो हाइपोथर्मिया प्रिवेंट नहीं करती है? देखो, न्यू बॉर्न बेबीज़ में हाइपोथर्मिया प्रीटर्म में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना. सी, यूज़ ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक रैप्स. हम लोग क्या करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी या प्रीटर्म बेबी को पॉलीथीन रैप में रैप कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी से जो फ्लूइड लॉस ना हो. यूजिंग डबल लेयर्ड इंक्यूबेटर. येस, वी यूज़, उसको डबल लेयर कर देते हैं इंक्यूबेटर्स को अंदर से ताकि उसकी वार्मथ बनी रहे. यूजिंग वूलन कैप्स टू कवर द हेड. येस, वी कवर द हेड ऑफ द बेबी विद द कैप सो दैट देर इज हेड का सरकमफ्रेंस जो सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड फ्लूइड लॉस सबसे ज़्यादा हेड से और बॉडी में हेड से हो सकता है. सो कीपिंग द डिलीवरी रूम टेम्परेचर एट 22 डिग्री सेल्सियस. इफ यू कीप द डिलीवरी रूम टेम्परेचर 22 डिग्री, इट विल डेफिनेटली कॉज हाइपोथर्मिया टू द बेबी. सो हियर द आंसर इज 22 डिग्री. टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज 150 ml. Size of suction catheter used in a neonate for oral and a nasal suction is. See, यहाँ पे ऑप्शन में 8 फ्रेंच है. जब भी कोई नॉर्मल बेबी है, नॉर्मल वेट का बेबी है, उसका हमेशा सक्शन 8 फ्रेंच से किया जाएगा. अगर ऑप्शन में 5 फ्रेंच है और प्री टर्म है तो यू विल राइट 5 फ्रेंच एंड प्री टर्म, एंड वेरिएशन कैन बी देयर. What is the most common and ideal pelvis? Android, gynecoid, platypoid, arthropoid. See, gynecoid pelvis is the best ideal pelvis which is considered as कि ये normal childbirth में favorable है. The feeling of the child's movement by the mother is called. देखो इसमें क्या है, एंगेजमेंट क्या होती है, पहले तो लाइटनिंग क्या होती है. लाइटनिंग होती है द मोमेंट द हेड सिंक्स इनटू द पेल्विस एंड द जस्ट जब फुल टर्म प्रेगनेंसी में आफ्टर 37-38 वीक्स द हेड एंगेजमेंट होने लगती है तो हेड जो होता है वो पेल्विक कैविटी में चला जाता है. तो आपका जो प्रेशर जीफी स्टर्नम तक एब्डोमेन जो होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज लाइटनिंग. नाउ कमिंग टू एंगेजमेंट. एंगेजमेंट में क्या होता है, द हेड एंगेजेस इनटू द पेल्विक कैविटी. दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. एंड क्विकनिंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चा पहली बार किक करता है, दैट साइन इज कॉल्ड एज क्विकनिंग. तो हेयर द आंसर इज क्विकनिंग, एंड बेलॉटमेंट इज ऑल्सो नॉट द आंसर. The forward bending of the uterus in relation to the vagina is called anteflexion, plantar flexion, anteversion, dorsiflexion. See here the answer is anteflexion.
Jacomer sign is also called as, here also known as Osiander sign, Chadwick sign, Goodell sign, and Hegar sign. See, I'll tell you, it is also called as the Chadwick sign. And you know what is Chadwick sign? It is a bluish, purplish discoloration of the cervix during the early pregnancy time. यूनिवर्सल ब्लड डोनर, सी दिस क्वेश्चन में क्वेरी भी आया था कि व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर. आई टेल यू वन थिंग. यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज़ अ ओ ब्लड ग्रुप एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज़ अ ए बी ब्लड ग्रुप. बट अगर इसमें O पॉजिटिव है तो इट इज़ ऑलवेज फेवरेबल टू डोनेट O पॉजिटिव ब्लड टू दी O पॉजिटिव और टू अदर. बट इफ़ इट इज़ O नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसमें एंटीजन भी नहीं है और एंटीबॉडी भी नहीं है. तो दिस ब्लड ग्रुप O negative blood group is a universal, ideal universal donor. If it is in the option, then you will tick O negative, and if it is not in the option, then you will tick O. So here the answer is universal blood donor is O blood group. सी BCG वैक्सीन इज़ डाइल्यूटेड इन, ये मैंने पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी लिया था. एंड समहाउ बाय मिस्टेक आई हैव टेक द ऑप्शन स्टेराइल वाटर. सी हेयर द करेक्ट आंसर इज not distilled water, not ringer lactate, and not sterile water. It is the normal saline. Why it is the normal saline? Because the BCG vaccine is given intradermal, and whenever you give intradermal injection, you give in the normal saline dilution, because distilled water or the sterile water is very irritating into the intradermal part, and it cause lot of itching and rash to the patient. And so normal saline is the ideal fluid. But when it comes to the measles, it is given subcutaneously, and the water is distilled or the sterile water, the water which comes with the injection. BCG, it is the normal saline answer. I'm really the largest organ in our body. See, I'll tell you one thing. This question also had a query. I want to tell you, whenever the option is asked, the largest internal organ. See, internal organ, liver. But no, largest organ, the answer is skin. Skin is the largest organ, and if it is internal organ, it is liver. Thank you so much. Like, subscribe, and share.